Now we will see actual poem. I will read the poem first and then we'll give you the explanation line to line and word to word, right? If any difficult word comes, then you should note it down, right? Actual words meaning are also given in the textbook, right? On the left side you can see. Now see the poem. It is very beautiful poem and you should believe on yourself, right? In a line I would say about the poem. First stanza of 4 lines. To believe is to know that every day is a new beginning. To believe, right? To believe मतलब किसी के ऊपर believe करना, भरोसा करना, right? मतलब किसी के ऊपर भरोसा करना is to know that everybody is a new beginning. We should believe. हमें भरोसा करना चाहिए कि हर एक नए दिन की शुरुआत एक नई लाइफ की शुरुआत है, right? A new beginning. It is a new beginning and is to trust that miracles happen and dreams really do come true. हमें हर एक दिन बिलीव करना है कि हर एक दिन एक नई शुरुआत है और हर नए दिन कुछ ना कुछ तो मिरेकल्स होने वाले हैं, राइट? मैजिक होने वाला है, कुछ हमारे जो भी ड्रीम्स है वो ट्रू होने वाले हैं. वी शुड बी पेशेंट एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर ड्रीम्स, राइट? मीन्स we should believe that the things would happen one day certainly, right? You should believe, you should have that patience. The first stanza is saying the same thing. We should believe, हमें believe करना चाहिए कि एक दिन हमारे जो भी मतलब ड्रीम से, एस्पिरेशन से, मिरेकल्स है, राइट, जो होने वाले हैं, all these things will happen, but for that we should wait, we should believe. Second, to believe is to see angels. हमें ये भी believe करना है कि मतलब that we can see, right? Believe is to see angels. हमें angels भी देखने हैं, right? That we should believe. And the dancing among the clouds, we should see the angels, those who are dancing among the clouds. Angels जो है वो cloud में dance कर रहे हैं. We should believe, right? We should imagine all. And to know the wonder of a stardust sky. Stardust, they have given the meaning. See, stardust matlab having a magical quality. To know the wonder of a stardust sky, that sky is having a magic, because एक जो भी अभी हमने पिछले लाइन्स में देखा है कि the clouds are there and the angel is also dancing there, and this is a whole magical moment for the sky, and that's why they mentioned here what? To know the wonder of a stardust sky. This is the wonder of that magical, right? That magical quality of that sky. एक quality है sky की. And the wisdom of the man in the moon. And the wisdom means what? Knowledge, right? Wisdom of the man in the moon. We should believe on ourselves, right? On the wisdom also we should believe. See now, third stanza. To believe is to know the value of nurturing heart. To believe is to know, मतलब हमें ये भी believe करना है. To know the value, हमें value जो है, right? Value of nurturing heart. Nurturing heart मतलब प्रोवाइडिंग नरिशमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन. मतलब हम एक दूसरे की जो केयर करते हैं, हमें बिलीव करना चाहिए. वी शुड बिलीव एंड केयर फॉर ईच अदर्स हार्ट. वी शुड नॉट हर्ट ईच अदर, राइट? वी शुड केयर फॉर ईच अदर. वी शुड नॉट हर्ट. सो दैट नर्चरिंग हार्ट एंड द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज. हमें बिलीव करना चाहिए कि जो भी चिल्ड्रन है उनके आईज में हमें इनोसेंस देखना है, राइट? डोंट यू सी द इनोसेंस एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. मतलब फ्रॉम द चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, इनोसेंस दैट वी शुड सी, वी शुड बिलीव, करेक्ट? एंड फ्रॉम एजिंग हैंड मतलब ओल्ड हैंड, राइट? मतलब जो भी एल्डर पीपल है हमारे फैमिली में, लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, their hands we will consider here as a aging hand, right? And this aging hand they have given, aging means growing old, right? मतलब जो भी हमारे दादा दादी है, so their hands compared here as a aging hand. So we should consider
दे एजिंग हैंड्स ब्यूटी, उनकी जो ब्यूटी है, यू शुड नॉट कंसिडर द हैंड्स फ्रॉम आउटर ब्यूटी, राइट, मतलब बाहर से कैसे दिख रहे हैं, बट सी द लव इन द हैंड, द अफेक्शन, द टच, करेक्ट. सो सी from child's eyes we should believe on the innocence, from aging hand मतलब जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है उनके तरफ से हमें ब्यूटी देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, एंड फॉर इट इज ट्रू दे टीचिंग्स वी लर्न टू लव, फ्रॉम देम दैट वी विल लर्न टू लव, राइट. जो भी एजिंग हैंड है, जो भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, फ्रॉम देम वी कैन लर्न व्हाट, learn their teachings, that learn to love, right, to share our love with others, right, not to hurt others, right, share your happiness. So these things you can learn from only that older people, right, only from aging hands. See now next stanza, the stanza number 4th. To believe is to find the strength. हमें ये बिलीव करना है कि हमारे अंदर भले ही स्ट्रेंथ ना हो, हमें बिलीव करना है कि एक दिन मेरे पास स्ट्रेंथ रहेगी, राइट. यू शुड बिलीव. टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस. हमें बिलीव करना है कि हमारे अंदर वो पावर है, स्ट्रेंथ है, राइट, हमारे पास वो करेज है, that we can do anything, right, whichever the things you think that it is impossible, you should believe on yourself, you should have that courage to complete that task, correct. See now when it is time to pick up, so pick up the pieces, this is a phrase they have given the meaning. Pick up the pieces means return to normal after a shock or disaster. Return to normal means whenever you face any difficulties, right, बहुत बार एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, so that you become nervous, and now from that moment when you come back with more power, with more study, and you score good, so that situation means here pick up the pieces. Pick up the pieces means what? Whatever the shock or whatever the difficulties you face, and from that difficulty now you have already covered or dominated that difficulty, that is pick up the pieces. So now when it is time to pick up the pieces, मतलब जो भी तुमने हार मान ली है, राइट, जहां पे भी तुम हारे हो वहां से अब वो भूल जाना है, and that you should believe on yourself and be ready for the next. So when it is time to pick up the pieces and begin again, वापस से स्टार्ट करो, you should not stop, correct, you should begin again. To believe is to know, हमें मतलब हमें बिलीव करना है, मतलब किसके ऊपर बिलीव करना है? टू बिलीव इज टू नो, मतलब हमें नो कर लेने में, मतलब जानकारी लेने में हमें बिलीव करना है, राइट, मतलब टू गेट द नॉलेज, राइट, टू गेट द विजडम वी शुड बिलीव. व्हाट आर द नॉलेज यू आर हैविंग, बिलीव दैट you can get more and more knowledge, right. Remember one thing, that till the end of our lives we are student, we keep learning, right. It doesn't mean that I have passed this particular degree then I will stop learning, no, correct. So we are student till the end of our lives. See, we are never alone. हमें ये भी बिलीव करना है कि हम अकेले नहीं हैं, right. Most of the time the students and the people get very nervous that I'm the only one that is facing this problem. No, never consider this. You are not alone. You are not having such difficulties only for you, right. There are many people, even the more or the worst situations they are going through, right. So see, you should not believe, and you are never alone. Never think that you are lonely there. See, now that life is a gift, you should consider life is a gift. We don't know that what is going to happen next. हमें पता नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है. So life is the biggest gift in our life, right? So life is a gift, and this is our time to cherish it. Cherish it means what? To hold something as very dear, of great value. मतलब जो भी हमें मिला है that we should enjoy it, correct. मतलब जो भी हमें, मतलब for example, see, we are enjoying now our day, right. God has given us new fresh morning every day, right. God is gifting every day a day. हर रोज एक दिन God हमें गिफ्ट कर रहा है. We should not waste the days
wasting, like for example, by considering that I'm so sad, right, I failed, I got less marks, and you wasted your day. You should not do these things. You should enjoy your each day. Now, to believe, last stanza of 5 lines. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. आपको बिलीव करना है, चाहे कितने भी बुरी सिचुएशन रहे तो आपको बिलीव करना है कि इसका जो अंत है वो अच्छा ही होने वाला है, राइट? बिकॉज दिस लाइन इज सेइंग द सेम थिंग. टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन. बहुत सारे सरप्राइजेस हमारे लाइफ में आने वाले हैं, दैट आर वेटिंग. यू शुड हैव दैट पेशेंस. करेक्ट. नाउ, एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच. हमें ये भी बिलीव करना है कि हमारे जो भी ड्रीम्स है, होप्स है, राइट, दैट आर विद इन अस, राइट, दैट विद इन रीच मीन्स पॉसिबल टू अचीव. विद इन रीच मतलब हम पॉसिबली उसको अचीव कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल. विद इन रीच, एंड इफ ओनली वी बिलीव we can achieve anything, right? As because all these targets, achievements are within to reach, means possible to reach there. So but only you should have that belief, right? You should have that belief in yourself, then only you can achieve. मतलब आपके ऊपर आपका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, right? That is a belief. Then only you can achieve anything what you want in your life. So this was just very simple poem, बहुत ही simple poem थी, right? The questions, whatever the questions they are, that you can answer it your own, right? The exercises are being focused more for your exam point of view. So we'll move to exercises very soon, as it is known as workshop, correct? So it is known as workshop. We will move to English workshop very soon. In this way, we have ended up with a warming up session, right, and actual poem. We'll move to our question and answers workshop.